question is very common, very demanding, and very popular. So, what about these early on relationships, especially among young students? I have a cousin in class 10th. I see their classmates also being in relationship. At this age, I laugh, but at their age, they don't understand. And in drop year 11, 12, this is the age of making career, and this is also the age to fall in love. So, sir, at hostel also I have seen many people. Like in college, if I see, I find that okay, they can handle. But in drop year in 11, 12, and class 10, I just don't know what to tell them. So, because after breakup, they are very much mentally disturbed and it's very difficult for them to overcome that. So, do you want to give some advice to them? And what is the age of falling in love and being in relationships? Okay. So there is a need to demystify several things. First thing, love is a natural phenomenon. Yeah. Okay. That means you are a product of love. Your parents were in love with each other. Mhm. They had time together. So were you conceived. So you are product of love. So does all other people around us are also product of love, which means that you are born with love. Yeah. So love is right inside of yourself. It's not outside. First of all, we must understand that in order to love yourself, you don't need anybody. Unfortunately, the movie industry, unfortunately, the societal status is all linked to who is your companion. Are you in relationship? I have a very simple analogy for relationship. Relationship has a beginning and it has an end, which is why it is called relationship. Okay. But society thinks that those who are in the relationship are class of a people. Because society has slowly intoxicated us with the thought that you are not capable of loving yourself. You need someone else to love yourself. You need someone else to tell you that you are beautiful. Mhm. Okay. Now, this has happened for centuries and centuries together. Now, this societal conditioning is not going to be eradicated just like that. Yeah. There has to be a different definition, and the truest definition of love needs to be shared. The only person that you require to love yourself is you. If you love yourself, others will start saying that you are beautiful. Others will start appreciating. But the problem is, right from our childhood, we are told that you are not beautiful, you are not worthy of being loved. So you forget that that bakwas that society has told you is untrue. And if something is told to you time and again, you tend to believe that. So, if you, the best way in your youthful days is not to go after so called love or a lover. Yeah. You start loving yourself, you make yourself feel that you don't need anybody else because you are yourself is a fountain of love. And if you love yourself, then you will do right thing for yourself. Okay. Another aspect is love cannot be demanded. कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी तो मैं अपने आप से कुछ कर लूंगा. तुम मेरे लिए फूल नहीं लाओगे तो मैं समझूंगी तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो. ओके. जो Yes, sir. अपने आप को संभाल नहीं सकता है वो आपको क्या संभालेगा. True. So this understanding and interpretation of love is very uh,
misconstrued in our society. Uh, I mean, this is one topic on which I can go for hours together and explain. But I would say if you like somebody, even if you are young in 10th standard, 12th standard, graduation, post graduation, check with yourself that you are liking or loving that person because you have something to gain from that individual. And you would see the relationships break because there are certain set of expectations from another partner. And when those expectations are not fulfilled, Yeah. one person in that relationship will boot out the another person, and that another person will be in frustration. Yeah. Okay. So that means they were never in love with each other. They were just into exchange of materialistic or other types of gains from each other. And then they realized that those gains cannot be fulfilled. So breakup हो गया. बट ये कितना अच्छा रहेगा कि आपको कोई पसंद आता है because you like he or she to be the way they are at that first moment. तो फिर उसे ऐसा ही रहने दो ना. उसे बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब भी आप किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो उस आदमी को अच्छा नहीं लगेगा. तो नेचुरल है वो आपको छोड़ के निकल ही जाएगा. तो ये दूसरों को बदलने की कोशिश रिलेशनशिप को तोड़ देती है. एंड दैट हैपेंस बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन दैट यू योरसेल्फ आर अ लव. जब आपको ये पता चलता है कि मैं खुद प्यार हूं तो मुझे किसी की क्या जरूरत है. मैं सभी को without any fear, favor, and expectations, can give my compassionate thoughts, can give my thoughts of healing, can give my thoughts of well being. I think that is true love. Thank you so much, sir. I'll definitely share this to my friends. And, sir, how to overcome breakups, if you can shed some light on this. ओके, सो ब्रेकअप्स के बारे में मेरा कहना यह है कि जिंदगी में जिंदगी एक जर्नी है. उस जर्नी में आपको बहुत लोग मिलते हैं. तो जब कोई आपसे मिलता है तो उसका आपसे दूर जाना तय है. पहले तो ये समझ लो. दूसरा, इन अ relationships, another person is not your pet. Okay, he is not your slave, she is not your maid. Remember that they have different likings too. Now, unfortunately, we all forget that he or she as an individual first and your loved one later. And even if he or she loves you, they can have different likings also. Yeah. So when you try to expect, when you try to control your love, frustration is bound to happen, breakups are bound to happen. So when breakup happens, I would say, hey, look, मेरा और उनका साथ यही तक था. इसका मतलब मुझे अब उसके साथ की जरूरत नहीं है. जब ऐसा हुआ तभी ये ब्रेकअप हुआ, या फिर उसको मेरे साथ की जरूरत नहीं है. और जिनको आपकी जरूरत नहीं है उनके पीछे भागने की जरूरत क्या है? नाउ इफ यू ब्रिंग इन दिस फिलॉसफी, imbibe this philosophy, coping with breakups becomes a simplistic, easiest, and painless journey.
अगर आपने ये तय कर लिया कि उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, तो फिर आपको ज्यादा तकलीफ होगी। हम्म, और एक चीज है कि उसके बिना अगर आपकी जिंदगी अधूरी है, तो क्या आपके लिए सांस वो लेता है या वो लेती है? आपके लिए पानी वो पीता है या आप पीती है? आपके लिए खाना वो खाता है या वो खाती है या आप खाती है? true. तो इफ यू keep this understanding as simple as that, then breakups won't hurt you. Having said this, it is a very complex issue because we have made it, society has made it ever complicated. इस सोसाइटी की एक खासियत है, हम सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और कॉम्प्लेक्स चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ताकि ये गुत्थी कभी सुलझे ही ना। But I think the simplistic way of overcoming breakups is to tell yourself कि उनका और मेरा साथ यही तक था। इसका मतलब आप, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। एंड लेट देम फ्लाई लाइक अ बर्ड, Yeah, एंड योर सोल विल बी हैप्पी एंड योर सोल विल बी at peace very quickly. that's really thoughtful, sir. So let's move on to mental peace from breakups. So, sir, in your book, when I went to Berhampur, then I came to know about it and I have read. So, you mentioned creating a life where other achievements reflect inner peace and purpose. So, sir, how can students work towards a more holistic and balanced life while juggling their academic and personal goal? Because our mental health has become and inner peace has become a very huge issue nowadays. Okay, so I would start by addressing parents. The issue of emotional health and mental peace is largely first because of your homely atmosphere. If you find your parents are at odds with each other, if you find there are a lot of competition happening, if you find your parents coming and talking about not having promotion at office, okay, or having too much of workload, then unconsciously you have got the feedback that जिंदगी बहुत कठिन है, Hmm. और जिंदगी में अच्छा बनने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर हम वही करते हैं जो आजू बाजू के लोग आपको बताते हैं। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू होलिस्टिक सक्सेस इज नॉट फाइंडिंग द पर्पज ऑफ लाइफ। Yeah. पर्पज ऑफ लाइफ वो होता है कि आप वही करो जो आपको सबसे अच्छा और सबसे पैशनेटली पसंद Hmm. है ना? जैसे कि मैं साइंस करता हूं, Hmm. लेकिन मुझे लोगों की जिंदगियां बदलना, उनको हील करना बहुत पैशनेटली पसंद है। तो वो मेरी जिंदगी का पर्पस हो गया। हमारी शिक्षण व्यवस्था हमको ये जिंदगी का पर्पस सोचने का, ढूंढने का मौका नहीं देती है, लेकिन हमको ये मौका खुद से लेना चाहिए। देर आर सिंपल एक्सरसाइजेस दैट वन कैन डू टू फाइंड अ पर्पस ऑफ लाइफ। तो लोग मुझे पूछते हैं कि ये पर्पस ऑफ लाइफ आपको कब ढूंढना चाहिए? वेल, एट एवरी पासिंग डे। बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी जिंदगी की परिभाषा विस्तृत हो जाती है, यू गेट न्यू अंडरस्टैंडिंग। सो योर पर्पस ऑफ लाइफ ऑल्सो रिक्वायर्स अ कोर्स करेक्शन। एक बार आपको पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गया, तो फिर आपकी बाकी की जर्नी एफर्टलेस होगी, एंजॉयबल होगी। और फिर आप वही काम कर रहे हैं जो आप पसंद करते हैं, तो फिर आपको थकान नहीं आएगी। उसमें आप फेल हो गए तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा।
है ना? तो Yes. सबसे पहले ये पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढना जरूरी है। और इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बताते रहता हूँ कि अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढिए। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग दिस पर्पस ऑफ लाइफ, जिसके बारे में कि हम किसी और टाइम पे बात कर सकते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ को कैसे पाना है। Sure. दूसरा, सक्सेस कोई एक गोल पोस्ट की तरह नहीं होती है। सक्सेस इज ऑल्सो इवॉल्विंग। बचपन में उठ के चलना, खड़ा होना वॉज अ सक्सेस। Yes. 10th पास करना वॉज अ सक्सेस। 12th पास करना वॉज अ सक्सेस। पीएचडी पाना वॉज अ सक्सेस। जॉब पाना वॉज अ सक्सेस। बट ये सारा होने के बाद भी लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, Mm. क्योंकि फिर भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं पाते हैं। द रीजन इज वी कंपेयर अवर सेल्स विथ अदर्स। Sure. We should stop comparing. Okay. And therefore, I always say that your grading system, your fail, pass, is just a key to the next door. It really truly does not assess you what your true potential is, because there is no better assessor than yourself to know कि आप हो कौन, आपकी कितनी क्षमता है। Okay. But when we stop therefore when we stop comparing, we truly uncover our potential. We seed our potential. तो पहले तो दो चीजें, एक अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना, दूसरा अपने आप को कंपेयर करना बंद करना, Mm. तीसरा वो रात वाला प्लानिंग करना अगले दिन के लिए, वन बेबी स्टेप्स एट ए टाइम। Yeah. चौथा, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंटली एक्शन लेते रहना। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिंदगी जीने की जो आपको आज तक मोहलत मिली है, Mm. उसके लिए उस जो कोई शक्ति है उसके प्रति सदैव धन्यवाद देना। टू बी इन ग्रैटिट्यूड। Yeah. सो व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड, you have surrendered to the universal forces. When you are surrendered to the universal forces, there is no friction, because you are part of that universal forces. So your flight will take up easily. When your flight will be frictionless, you will soar to the highest elevation easily. Yes. And so you will achieve much better than what otherwise you would have achieved on a frictionless path. So Mm. gratitude is also very important. कि जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं बीते हुए कल को धन्यवाद देता हूं कि थैंक यू वेरी मच, आज भी मेरी सांस चल रही है, यू नो। और मैं Yes. जब आज सोने जाता हूं तो मैं दिन को थैंक यू बोलता हूं कि थैंक यू, मेरे को किसी गाड़ी ने आके ठोका नहीं, या मेरे को किसी ने कुछ मारा पीटा नहीं, या कोई ज्यादा शॉवर नहीं हुआ, या रेन नहीं हुआ, फ्लड नहीं हुआ, तो मैं मेरा अपना काम कर पाया। तो ये पांच चीजें हैं: स्वयं की प्रतिभा को समझना, अपने जिंदगी को पर्पस को खोजना, Yes. फिर उसके बाद अपने आप को कंपेयर करना बंद करना दूसरों से। Mm. अगर कंपैरिजन करनी है तो अपने कल के साथ करो। फिर माइक्रो प्लानिंग करना, रात का, एक दिन का, ज्यादा नहीं, डे बाय डे। Mm. फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना और कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली काम करते रहना, विदाउट एक्सपेक्टिंग। कर्मण्येवाधिकारमस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका अर्थ यही है कि कर्म करते रहोगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन फल के लिए कर्म करते रहो तो कर्म बहुत कठिन हो जाता है। और फिर बीते हुए दिन के लिए और आने वाले दिनों के लिए उस वैश्विक फोर्स को
धन्यवाद कहना, वो ब्रह्मांड की जो शक्ति है उससे धन्यवाद कहना कि थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ योर अमेजिंग एक्सपीरियंस कॉल्ड ह्यूमंस लाइफ. Thank you so much, sir. That was really heart touching.